Dear students, in the last class we have seen trigonometrical representation of Fourier series. There are in all three forms of Fourier series representation. The first one we have studied, that is trigonometrical Fourier series. Second one is the polar form of Fourier series, and the third one is the complex Fourier exponential series. So we will be studying polar form and the exponential form of the Fourier series now. We know that already that the trigonometric Fourier series can be represented as xt if is the signal, continuous time period signal. Xt is equal to a0 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos n omega 0 t plus bn sin n omega 0 t. This is our trigonometric representation of Fourier series. Then the first component a0 is the DC component. An and bn we have already defined, integration of one time cycle into all that we have defined. Now if we multiply and divide the second term of the equation excluding a0, यहाँ पे सेकेंड टर्म में हम देख सकते हैं वी है मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन स्क्वेयर एंड वी हैव डिवाइडेड the terms by an square plus bn square. So what we are getting is xt is equal to a0 plus sigma n is equal to 1 to infinity an square plus bn square common plus an upon an square plus bn square cos n omega 0 t plus bn upon under root an square plus bn square sin n omega 0 t. So if we say an upon under root an square plus bn square is equal to cos phi n and bn upon under root an square plus bn square is sin phi n, then bn upon an becomes tan phi n and phi n is equal to tan inverse bn upon an. Now we can write cos phi n and sin phi n in place of this an upon an square, this. We can replace this and this with the terms and we can write that xt is equal to a0 plus sigma n is equal to 1 to infinity under root an square plus bn square cos n omega 0 t cos phi n plus sin n omega 0 t sin phi n. So xt becomes a0 plus sigma n is equal to 1 to infinity an square plus bn square, and we will apply now the trigonometric formula cos a cos b plus sin a sin b is equal to cos a minus b. ये formula हम apply करेंगे. So this expression will become cos a minus b, that is cos n omega 0 2 minus 5n. Therefore now we can represent this a n square plus b n square under root is equal to dn and a0 with d0. So our series representation becomes xt is equal to d0 plus sigma n is equal to 1 to infinity dn cos n omega 0 t minus phi n, where phi n is equal to tan inverse bn upon an, and these coefficients dn are called the spectral amplitude, and the amplitude of the spectral component dn having a frequency n omega 0 to n omega 0 t. So t will be replaced the n omega 0. It will give you the harmonics if you substitute n is equal to 1 2 3 4 and so on. So this is known as the amplitude spectrum of the function xt, and phi n, which is equal to tan inverse bn by an, is known as the phase spectrum of the function xt. So in this way we can determine the phase and the harmonics of a Fourier series. Now the second type of Fourier exponential series is the exponential form of Fourier series. This exponential form of series is used widely because this is very easy during the signal analysis. Therefore for signal processing purpose and in signals and system, for the purpose of the analysis we use the complex form of Fourier series. So the trigonometry, as we know that trigonometric Fourier series is given as
एक्स टी इज इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन ओमेगा ज़ीरो टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा ज़ीरो टी. नाउ we will apply the Euler's identity formula. We know that e to the power j theta is equal to cos theta plus j sin theta. So from this formula, cos theta is equal to e to the power j theta plus e to the power minus j theta by 2, and sin theta is equal to e to the power j theta minus e to the power minus j theta by 2. So we will substitute cos n omega 0 t and sin n omega 0 t in the Euler's identity format. So by substituting this value in the equation, we come to know that यहाँ पे हमने क्या किया, cos n omega 02 को we have replaced by its Euler identity formula e to the power theta plus e to the power minus j theta by 2. So यहाँ पे theta is n ओमेगा 0 t, तो ये हमने रिप्लेस किया. सिमिलरली साइन थीटा साइन एन ओमेगा 0 टी को हमने रिप्लेस किया e टू द पावर जे एन ओमेगा 0 टी माइनस e टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा 0 टी बाई 2j. सो ये अब इसमें हम e टू द पावर जे एन ओमेगा 0 टी को कॉमन निकालेंगे इसमें. सो वी विल बी हैविंग ए टू द पावर जे एन ओमेगा 02 इन कॉमन. सो ब्रैकेट में आ जाएगा ए एन माइनस जे बी एन टर्म आ जाएगी डिवाइड बाई 2, एंड ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा 02 कॉमन निकालने से ए एन प्लस जे बी एन टर्म हमको मिलेगा. नाउ ए एन माइनस जे बी एन बाई 2 को हमने रखा सी एन, एंड ए एन प्लस जे बी एन बाई 2 को रखेंगे हम सी ऑफ माइनस एन, बिकॉज सी एन and c minus n are the complex conjugate of each other. So cn is equal to c of minus n. So substituting this value, and we will substitute a0 is equal to c0. So what we will be getting, instead of an minus jbn by 2 we will write cn, and instead of an plus jbn 2 by an plus jbn by 2 की जगह हम लिखेंगे c minus n. Now if we combine them, for this term, especially for this term, we can replace this minus n by changing its limits. N is equal to minus infinity to minus 1. So this cn will be replaced by cn, and combinedly the equation will become n is equal to minus infinity to infinity. Now the limit has changed, which was from 1 to infinity and complex conjugate term we were taking. So we have changed the limit, and all the terms will be incorporated in that. So n is equal to minus infinity to infinity cn e to the power j n omega 0 t. So c0 has been included under the sigma sign here, and combinedly we are saying that n is equal to minus infinity to infinity cn e to the power j n omega 0 t is the exponential form of the Fourier series, and the values of cn is equal to 1 by 2 an minus jbn, which is expanded, then we will be getting 1 by t minus pi by 2 to pi by 2 xt cos n omega 0 t minus j sin n omega 0 t dt, or cn can be equal to 1 by t minus pi by 2 to pi by 2 xt e to the power minus j n omega 0 t dt, and c minus n is equal to 1 by t minus pi by 2 to pi by 2 xt e to the power j n omega 0 t dt. c n और c माइनस n में सिर्फ e के पावर में साइन का डिफरेंस है, रेस्ट ऑफ ऑल इज़ द सेम. तो अभी आई थिंक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अब जब हम इसमें सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि हार्मोनिक्स हमको प्लस माइनस एन ओमेगा 0 t इस फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं. तो फ्रीक्वेंसी तो निगेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्चुअली ये मैथमेटिकल मॉडल है फूरियर सीरीज़ किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक मैथमेटिकल मॉडल होता है. सो इसमें निगेटिव पार्ट भी आता है, लेकिन इट इज़ कोई भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका इमेजिनरी पार्ट को फिज़िकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी वैसा है. नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को फिज़िकली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, फिज़िकली इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, बट इट एग्जिस्ट इन द थियोरेटिकल फॉर्म, दैट इज़ द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द सिग्नल में. तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को बहुत सीरियसली आपको नहीं लेना है, फिज़िकली उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं.
एंड वी कैन नॉट अचीव इट फिजिकली. सो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग तक ही रहेगा ड्यूरिंग सिग्नल एनालिसिस. सो माइंड वेल दिस थिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. और इस क्लास के बाद नाउ वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑन द फूरियर सीरीज़, विच इज़